We are talking about desert पर बाद में आएंगे, अभी हम forest के बारे में बात करें. We are talking about tropical. Tropical can be wet, tropical can be dry. I'm concentrating on wet. I'll come on to dry later. When I talk about tropical wet, I correlate it to forest. And I have got principally two types of forest: rainforest and monsoonal forest. The rainforest is called evergreen forest. Evergreen forest because forest is always with the leaf cover. ठीक है? And now we are trying to enlarge it in detail. So I'm writing it one here, I'll write it two here. This is my forest as category 1 and this is my category A tropical. So forest में हम rain forest की बात कर रहे हैं. अब ध्यान से नोटिस करते जाना. Rain forest is densest diversity of plant, develops vertical canopy. Vertical canopy at least incorporate tall trees, mid-height trees. Plants have broad leaf, shallow root, shallowest, exceptionally tall, thin leaves, phototroph adaptation, creating dark, gloomy. Before I add some important factors, let me write some of the name: ebony, mahogany, rosewood, balsam, ironwood, and range of epiphytes. Liana is the most prominent one. NCERT में mentioned है. Are the plants identified here? लिख लिया तो go ahead, बताओ, समझा रहे हैं उसको, समझो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. Then we'll add heterotrophs. Okay, the warmest and the wettest land biome is called rainforest. You can call it tropical rainforest, you can call it equatorial rainforest. When I talk about tropical rainforest, I'm talking about evergreen forest. Which type of evergreen it is? Mixed variety, densest diversity of plants involving deciduous plant, but the forest is always with leaf cover. So it is mixed variety of deciduous with evergreen forest. Number one. Number two, what is the reason we have got densest diversity of plants here? Because we are into the most favorable location for phototrophs. It is plentiful with sunlight, it is plentiful with water. Recall your study of climate. Have we not said 10 degrees north to 10 degrees south, there is no season cycle? Throughout the year, I remain warm and wet. So when I remain warm and wet, that is what plant requires. So habitat is most favorable for plants. So you name the variety of plant and we have it here. Number one. Number two, throughout the year, not a single day goes without rain. So you have got precipitation more than evaporation. And when precipitation is more than evaporation, automatically there will be waterlogged condition. Now plants have to adapt to that. So they will be very shallow rooted. They will be very thin leaved. They will be very broad leaved so that they can maximize the transpirational loss of moisture. Otherwise they will get rotten. Give me hand raise. Otherwise they will get rotten. Because if you are not, you are in such moist location, and you are not maximizing the transpirational loss, it is very likely that you will get rotten, you will not survive. So all adaptation of the plant, I'm shallowest rooted, I'm thin leaved, I'm broad leaved, is basically to maximize transpiration. And why I have adapted to it? Because I'm into the moist location. Okay. The next thing that you have taken into account is competition. All phototroph looks in for sunlight. And because there is densest diversity of plants and all the plants are broad-leaved, plants are in immense competition to each other to attain maximum of the sunlight. And that is the reason there is the multiple canopy. Canopy is a stratas, steps, multiple canopy of vegetation that evolves here. I have got tall trees, moderate heighted trees, shrubs, grasses, all of them. And no denial to the fact that if I talk about rainforest, as a diagrammatic representation, I'll say I have emergent layer, moderate heighted trees, shrubs and bushes, and forest layer. So you have to understand that they will be attaining maximum sunlight and they are surviving with minimum sunlight. Mind it that they all are plants. I'm surviving as a forest, you can call it shrub line. I'm surviving because I am adapted to the least availability of sunlight. Otherwise, I would have died. और जो emergent layer होता है, they are adjusted to highest availability of sunlight. अब सोच कर देखना, at all these four level, 1, 2, 3, and 4, 4 are ideally identified layer. When I say it is vertical canopy, right? So when I take the reference of these four layers, they all are broad-leaved.
Will it not be that the sun rays will fail to penetrate forest floor? Hand raise kar do. You are in that location where we are having no season cycle, सारे साल भर गर्मी है, फिर भी हम कह रहे हैं डार्क ग्लूमी फॉरेस्ट है. सुनने में तो ऐसा लगता है बिल्कुल ही कंट्राडिक्शन कर दिया. क्यों है डार्क ग्लूमी? क्योंकि सन रेज फेल्स टू पेनिट्रेट फॉरेस्ट फ्लोर. व्हाई? इमर्जेंट लेयर की पत्तियों से छूटेगा तो फिर मिड हाइटेड ट्री है, फिर बुशेस है, फिर ग्रासेस है, तो सन रेज फेल्स टू पेनिट्रेट फॉरेस्ट फ्लोर. आई थिंक दिस इज कंफर्टेबल. समझ में आया? एंड दैट इज द रीजन इट हैज लीस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी. अब आप ऐसे सोचो, ये इमर्जेंट लेयर में मेरा एग्जांपल है महोगनी. महोगनी इज वन ऑफ द मोस्ट कमर्शियली यूटिलाइज्ड डेसिडुअस वैरायटी ऑफ प्लांट. महोगनी को आपने कट किया अपने कमर्शियल यूज के लिए, आप बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडिविजुअल हैं, आपने महोगनी को कट करने के बाद मेक श्योर किया दैट यू आर सोइंग अ सैपलिंग ऑफ महोगनी इन प्लेस ऑफ अ ग्रोन महोगनी. जो सैपलिंग आपने सो किया है, इट इज अनलाइकली टू ग्रो, क्योंकि mahogany is an emergent layer. It has not adapted to the shady environment. Give me hand raise. When I take IUC, an International Union for Conservation of Nature, it says rainforest is one of the most depleted forest in spite of least commercial utilization because of its least regeneration. How it is possible for a forest which is densest diversity of plant to be having least regeneration because it is dark and gloomy? Give me hand raise. So these so seemingly contradicting characteristics are very important for us to understand. Now I have just used the expression these are least commercially utilized. What is the reason these are least commercially utilized? Wood is too hard, and that is the reason I have given you this name ironwood. Wood is too hard to work. Mane ironwood, and if you read NCERT older version, you have to encounter a term in Amazon basin, we call it selvas. There is a tree variety called cubarco, Latin American term, which actually means X breaker. Wood is too hard to be worked. So one is the reason this, and number two is impure stand. आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल बताया, आप महोगनी ढूंढ रहे हो तो एक महोगनी इधर मिलेगा, दूसरा इधर मिलेगा, तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर, छठा इधर. आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं बढ़ेगा प्रोडक्शन के लिए? यस और नो? एंड डोंट फॉरगेट, फॉरेस्ट फ्लोर इज ऑलवेज वाटरलॉग्ड, तो इट इज ऑल्सो इनएक्सेसिबल. So it is impure stand of the plant, wood to be too hard to be worked upon. That is the reason it is least commercially utilized. In spite of being least commercially utilized, it is suffering from deforestation because of its regeneration capacity. Hand raise कर दीजिए. अब ये जो आपको varieties दी हैं, इन varieties को याद रखेंगे. Names बहुत सारे हैं, but कम से कम कहीं से तो beginning होनी चाहिए. Ebony, mahogany are the common variety of hardwood plants. रोजवुड पर्पसफुली लिखा है क्योंकि आपको थोड़ी देर के बाद एक रेडवुड बताएंगे. रेडवुड और रोजवुड का डिस्टिंक्शन याद रखना है. बैल्सम इज लाइटेस्ट, माने इट इज लाइट वेटेड हार्डवुड. जितने भी रिवर राफ्ट्स बनते हैं या छोटे छोटे बोट्स बनते हैं वो बैल्सम की वजह से बनते हैं. बैल्सम इज द लाइटेस्ट वेटेड हार्डवुड. नॉर्मली अगर आप कैनेडियन लंबरिंग के बारे में पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि लंबर जैक क्या करते हैं, सॉफ्टवुड ट्रीज के लॉग्स को कट करके फ्रोजन रिवर के सरफेस पर रख देते हैं, बिकॉज सॉफ्टवुड जो है वो लाइट वुड होता है. जैसे ही समर सेट इन होता है, स्ट्रीम्स मेल्ट होनी शुरू होती हैं, वो लॉग्स ऑफ वुड अपने आप ट्रांसपोर्ट होकर पहुंच जाते हैं सॉमिल, क्योंकि वो सिंक नहीं करेंगे, दे आर लाइट वुड. जितने हार्डवुड होते हैं वो हैवी होते हैं. बैल्सम इज लाइट, इसलिए बैल्सम को रिप्रेजेंट किया. एपीफाइट आपको बता दिया, दोज प्लांट्स व्हिच रिक्वायर्स फिजिकल सपोर्ट टू सर्वाइव. Liana is a very good example. All epiphytes are not stranglers. Stranglers are essentially epiphytes. आप सपोर्ट लेते हो, जब आप खुद बड़े हो जाते हो तो जिसने आपको सपोर्ट दिया उसको रिप्लेस कर देते हो, उनको आप स्ट्रैंगलर्स बोलते हैं. आर बी कंफर्टेबल टिल है? फोटोट्रॉप, जितना हैबिटाट एक्सट्रीम होगा उतना एक्सट्रीम अडेप्टेशन होगा. सो व्हाट इज एक्सट्रीम फॉर रेन फॉरेस्ट? एक्सट्रीम फॉर रेन फॉरेस्ट इज टू वार्म, टू वेट. And in this too warm, too wet, immense competition among the phototrophs. So they are exceptionally tall, they are shallow rooted, they are broad leaved, they create dense foliage. Sun rays hardly penetrates the forest floor. Forest floor is always logged with water. So as soon as you combine all this,
What will be the characteristics of heterotrophs? Big animals missing. Lion, tiger, elephant, cheetah, leopard, bear, deer are not there in rainforest. रहेंगे कहाँ? Every inch of the forest floor is occupied by plant. Then the forest floor is dark and gloomy with waterlogged condition. समझ में आया कि नहीं? Animals are not there in rainforest. गलत. Apes are there. Biggest variety of apes. Tree dwellers, monkeys, chimpanzees, orangutans, you keep on counting. And which type of adaptation they show? They show what is called arboreal adaptation. What is arboreal adaptation? Tree dwellers. Why are they living on tree? Ground पर रहकर करेंगे क्या? Insect bite मिलेगा, मर जाएंगे? Yes or no? बिग एनिमल्स मिसिंग. रेन फॉरेस्ट में कभी भी आप एलिफेंट, टाइगर, डियर, बियर का हैबिटेट नहीं देखेंगे. आपको यहाँ पर एनिमल्स में कौन मिलेंगे? एप्स. जितने भी वैरायटीज ऑफ मंकीज, लंगूर्स, चिंपैंजीज, ओरंगुटान आप सोच सकते हैं वो सब. ट्री ड्वेलर्स को हम आर्बोरियल ड्वेलर्स बोलते हैं. दे डोंट टच द ग्राउंड. एंड एप्स के अलावा अगर इफ इट इज अडोब ऑफ एप्स, it is also adobe of reptiles. Biggest varieties of snakes, pythons, reptiles are identified there, and it is also adobe of होना ही चाहिए ना. Dark gloomy forest है, waterlogged forest floor है, और सारे साल भर warm condition होता है. तो इन्हीं insects पर ये reptile feed करते हैं, poisonous insects. Rain forest in terms of heterotroph is adobe of insects, adobe of reptiles, adobe of apes, and of course adobe of plants, but not big terrestrial animals. If this is comfortable, give me go ahead. वर्ल्ड में 2 principal location है जिनका specific नाम भी है, तो आपको पता होना चाहिए. एक है Congo Basin. Congo Basin falls in the political jurisdiction of Democratic Republic of Congo, and दूसरा है Selvas. Selvas is Amazon Basin. Amazon Basin is in Brazil, are the 2 biggest rainforest areas of the world. I'm done with the rainforest. अगर आपको समझ में आ गया तो हमें go ahead दीजिए, फिर हम आगे बढ़ें. Monsoonal को थोड़ा हमें डिटेल्स में इंडियन कंटेक्स्ट में enlarge करना है, बट अभी हम जरा ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर हैं, इंडिया में फिर उसके बाद जाएंगे. So when I'm talking about tropical forest as wet, tropical vegetation, tropical biome as wet, I've got forest. Forest का one variety समझ गए, rain forest. अब दूसरा वैरायटी है मॉनसूनल फॉरेस्ट. अब मॉनसूनल फॉरेस्ट को कैसे जज करें? मॉनसूनल फॉरेस्ट इज सीजनल रेनफॉल फॉरेस्ट. तो सीजनल रेनफॉल फॉरेस्ट में रेन फॉरेस्ट के मुकाबले में क्या डिफरेंस आ जाएगा? रिमूव कर दिया. जो मॉनसूनल फॉरेस्ट है यहाँ पर सीजनल रेन, तो सीजनल रेन होने से क्या होगा? डाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाएगी. डाइवर्सिटी डिक्रीज होने से क्या होगा? फॉरेस्ट डेसिडुअस हो गए. क्यों हो गए डेसिडुअस? क्योंकि डाइवर्सिटी डिक्रीज का मतलब हो गया ना लेस अंडरग्रोथ. हैंड रेज करो. प्योर स्टैंडिंग प्लांट हो जाएंगे, तो प्योर स्टैंडिंग प्लांट सब के सब एक ही समय में अपना लीव शेड कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ईयर विल बिकम लीवलेस. मॉनसूनल फॉरेस्ट को सीजनल फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, लेस अंडरग्रोथ, ये सारी चीजें बोलते हैं. यहाँ पर जो आपका अडेप्टेशंस है वो नॉमिनल है. मतलब मेरे पास कोई भी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कंडीशन है नहीं कि जहां पर मुझे बहुत एक्सट्रीम अडेप्टेशन दिखाई दे. एवरीथिंग इज नॉमिनल, सो अडेप्टेशन इज आल्सो नॉमिनल. So when I talk about the phototrophs here, as I said that they are having a deciduous variety of the plants. So इसमें साल, teak, then purposefully writing ebony, mahogany, sandalwood. You know, these are the important varieties of plants that we take up. They have got a moderate height, 30 to 32 meters tall. ब्रॉड ट्रंक, शूटिंग ब्रांचेस. आपने इस तरह के प्लान्स अपने स्कूल लेवल के प्रोजेक्ट में बहुत बनाए होंगे. सो यू आर टेकिंग अप दिस काइंड ऑफ प्लांट ऑल टुगेदर. नॉट लाइक कोकोनट पाम जैसा हमने थोड़ी देर पहले महोगनी बनाया था. इट विल बी लाइक दिस, ब्रॉड, शॉर्ट हाइटेड, 30-32 मीटर्स. रेन फॉरेस्ट में जो इमर्जेंट लेयर होते हैं तो 40 मीटर्स तक हाइट पर चले जाते हैं. सो यू हैव गॉट दैट. Okay, and when I talk about heterotroph, you can have all the variety. From herbivore, I'm purposefully writing some names. Rabbit, because I have to compare it. Squirrel, all variety. No specific adaptation. Why? Because very well developed ecosystem. Monsoonal forest, deciduous. Point कहाँ पर enlargement में आता है? When I change from monsoonal to desert. If you'll give me go ahead, then I'll be proceeding further. When the habitat is nominal,
I don't have any extreme adaptation. It's a big diversity because you are in warmer location, big diversity of phototrophs, big diversity of heterotrophs. But I don't have anything that is very specifically justified as extreme adaptation. अच्छा, I want to go to my diagram for a while. ध्यान से देखना. When I move from tropical forest, हमने इसको rain forest करके पढ़ा, फिर monsoonal forest, desert पर जाने से पहले मुझे grassland देखना पड़ेगा, तब desert पर जाओगे. तो आपने tropical को कहा wet है और dry है. wet में आपने कहा forest है, जिसको आपने rain forest और monsoonal forest में divide किया. hand raise करो. वाया ग्रासलैंड ही तो पहुंचोगे डेजर्ट पर. तो ग्रासलैंड क्या हो गया? ग्रासलैंड इज टू वेट टू बी डेजर्ट बट टू ड्राई टू बी फॉरेस्ट. हैंड रेस. ठीक, आगे वापस बोर्ड पर. सो व्हेन आई टेक रेफरेंस ऑफ माय स्टडी फर्दर एंड टॉक अबाउट ट्रॉपिकल हैबिटेट, where as per our list that we created in the beginning, we said tropical, which is warmer, can be divided into two categories, wet and dry. Wet can be rainforest, monsoonal forest, and dry will be desert. Automatically gives me category number 3 in between. उसी के बाद हम जाएंगे 4 desert पर. तो 3 क्या बना? Savanna. Have you heard about it? Savanna is tropical grass. Actually, सवाना इज वुडलैंड. हम सब ने बैम्बूज देखे. अगर आप बैम्बूज को इमेजिन करो, इनकी हाइट होती है 1.8 मीटर से 3 मीटर्स तक. अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको ट्रीज की हाइट बताई. एवरग्रीन में आपकी ट्रीज 40 से 42 मीटर्स हाइट की हो सकती हैं. डेसिडुअस में 30 से 32 मीटर्स हाइट की होती हैं. और नॉर्मली जो ग्रासेस होती हैं उनका हम जो हाइट लेकर चलते हैं वो 40 से 80 सेंटीमीटर्स लेकर. ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना. सवाना, बैम्बू, isn't it that they are too tall to be grass, too short to be trees? They are too tall to be grass and they are too short to be trees. इसलिए सवाना एक टिपिकल ग्रास नहीं होकर वुडलैंड है. वुडलैंड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कुछ बैम्बू जैसे टॉल ग्रासेस भी मिलते हैं और स्कैटर्ड ट्रीज भी मिलती हैं. सवाना इज अ ट्रांजिशनल बायोम. आई वांट टू राइट दिस स्टेटमेंट हियर. इट्स अ ट्रांजिशनल बायोम बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट. तो अगर हम ऐसा इमेजिन करें कि जैसा हमारा डायग्राम चल रहा है, उस हिसाब से डायग्राम को नोटिस करें. ये मेरा फॉरेस्ट है और ये मेरा डेजर्ट है. सो दिस इज माई फॉरेस्ट एंड दिस इज माई डेजर्ट एंड आई वांट टू प्लॉट सवाना हियर. सो सोच कर देखना, सवाना में ज़ेरोफाइट भी मिल जाएंगे, सवाना में ट्रीज भी मिल जाएंगे और सवाना में बैम्बू भी मिल जाएंगे. हैंड रेज कर दो. ट्रांजिशनल हो गया ना. टू वेट टू बी डेजर्ट, टू ड्राई टू बी फॉरेस्ट. तो सवाना किस तरह का हैबिटेट हो गया? सवाना हो गया एक सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशनल हैबिटेट. इस ट्रांजिशनल हैबिटेट में सवाना एज ट्रांजिशनल हैबिटेट क्या क्रिएट करता है? ये क्रिएट करता है इतने हैबिटेट डाइवर्सिटी कि आपको इंसेक्ट्स भी मिलेंगे, रेप्टाइल्स भी मिलेंगे, आर्बोरियल ड्वेलर्स भी मिलेंगे, बिग एनिमल्स भी मिलेंगे. बिग एनिमल्स में वर्टिकल फीडिंग पैटर्न होगा, अभी समझा रहे हैं, और उसी पर डिपेंडेंट आपको वैरायटी ऑफ कार्निवोरस मिलेंगे. सवाना इज अडोब ऑफ वाइल्ड लाइफ. मतलब आप नाम लो वाइल्ड लाइफ का, सवाना में मिल रहा है. वाइल्ड बुफेलो, जिराफ, zebra, lion, tiger, cheetah, monkeys, apes, reptiles, insects, all. जब आप रेन फॉरेस्ट में जा रहे हो तो आपको बिग एनिमल्स नहीं मिलते. जब आप मॉनसूनल फॉरेस्ट में जा रहे हो तो आपको इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स इतने आराम से नहीं मिलते. यहाँ पर आपको सारी वैरायटी मिल रही है. इसलिए जो सवाना है वो ओरिजिनली कंट्री ऑफ बिग गेम कहा जाता था, माने हंटिंग ग्राउंड. और आज की डेट में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज, बात करेंगे इनके बारे में. प्रोटेक्टेड एरियाज मतलब वाइल्ड लाइफ रेफ्यूज, नेशनल पार्क्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स, मैक्सिमम सवाना में. सवाना इज अडोब ऑफ वाइल्ड लाइफ. अगर समझ में आ गया है तो हैंड रेस करके बताइए. जितनी वैरायटी ऑफ एनिमल्स आपको सवाना में मिलेंगे उतने कहीं और नहीं मिलेंगे, क्योंकि सवाना में आपके पास बिग वैरायटी ऑफ हैबिटेट है.
as it is a transitional habitat. वर्ल्ड का सबसे बड़ा सवाना बेल्ट अफ्रीका में है और इसलिए नाम, और यहीं से नाम आया है, अफ्रीकन सवाना से ही नाम आया है सवाना। एंड वेयर इज अफ्रीकन सवाना, जल्दी से वो भी दिखा देते हैं। अपना मैप आप भी ओपन कर लो, हम भी मैप पर ही ओपन करके समझा देंगे, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू ग्रैब इट अप। आई वांट टू ओपन पॉलिटिकल फिजिकल मैप। ये मेरा एक आसानी से समझ में आने वाला मैप है, इसमें थोड़ा ध्यान से समझ पाओगे, तो इसी पर डिमार्केट कर देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, हमारे मैप पर दिया नहीं हुआ, आप अपने मैप पर ध्यान से देखना। ये जो आपका हमने बेल्ट बना दिया, रफली बना दिया, ये 10 डिग्रीज नॉर्थ और 10 डिग्रीज साउथ है ना। तो ये जो आपका पूरा बेल्ट हो गया, ये तो क्या बन गया, ये आपका बन गया रेन फॉरेस्ट, जिसमें हमने कॉन्गो बेसिन को लिया। अब कॉन्गो बेसिन रेन फॉरेस्ट के जो चारों तरफ आपको पिकअप करना है, बहुत ध्यान से नोटिस करेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, फ्रॉम कैमरून टू चाड टू सूडान, साउथ सूडान, इथियोपिया, कीनिया, तंजानिया, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, अंगोला। ये पूरा बेल्ट रफ हॉर्सशू मैग्नेट शेप का चलता है, इसको बोलते हैं अफ्रीकन सवाना। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सवाना बेल्ट। कहाँ से? कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया, कीनिया, तंजानिया, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, अंगोला, जो हॉर्सशू मैग्नेट शेप बना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सवाना बेल्ट। एक्चुअली नाम सवाना अफ्रीका से है।